पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है। उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना तक जा रही है, अंतर तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिकेशन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को पोस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल और लॉजिकल एड की बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इसमें सरकार गंभीरता से सारा विषय को लिया है।
मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूँ। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, आपने कहा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, आपने कहा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पेशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए। So would you just based on that suspicion or indication also want cancel NET UG? देखिए, दो प्रश्न आपने रखे हैं। एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड के लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार की इफेक्टिव कमेटी बनाएगी। उनकी कमेटी के रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमेटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारे यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तो तुरंत हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है। आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्काल निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट के सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं। हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है। और हम फिर कहना चाहेंगे, लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है। हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारे देश की भविष्य कटघरे में आ जाए।
Number 123. So this is Amrita from Deccan Herald. So you spoke about the bill for the anti-cheating bill, which was passed by the Rajya Sabha and the Lok Sabha in February this year. I just wanted to check if because the gadget notification is not been able to find. So does this bill have if will it be able will it be like be able to use this bill to sort of catch the accused in these cases, because the notification as long as it's not notified. My information has been notified, but law ministry is on the job of building the rules. It will be very soon. It will come out with rules, stringent rules, and all this incident will also give us a new dimension to think the new approach. And this bill will facilitate. Few months back, we don't have any weapon to face this kind of challenges. These kind of challenges are not only limited to the area. Nowadays, almost all state is affected by this kind of problem. So we come out with a holistic law. Now it will be converted to rules, and very soon all the document will be in the public domain. The primary job of law bringing us over. 125 to your right, sir. So, like you rightly said, that you do not want to get into politics on the entire issue, but the opposition has come hammer and tongs against you. Rahul Gandhi has said that the RSS and the BJP have sabotaged the education system, and he says that the priority of the Prime Minister has now been only reduced to finding the Lok Sabha speaker next and not focus on the future of the students. When I am appealing to my opposition colleagues not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I again appeal to my opposition friends, to student friends, let us faith on our system. We are a democracy. Just concluded election, people have reposed their faith, taken in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. And our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. 272 to the left. Sir, Ishwari from NTA. Sir, when this UGC-NET examinations already been cancelled after the credible inputs being received by the IC4, what sort of inputs were received? Number one. Number second, sir, there is a lot of financial burden that the students have faced after the examination had been given. Whether the Ministry of Education in future, whenever this examination will be reconducted, will help those students or give any sort of facilities to them as far as giving another round of examination, and when can we accept this examination to be reconducted again? Let me categorically clarify. As I said, specific question paper is there in the dark page. This input has been given by Home Ministry's prestigious organization, I4C. When we compare with the document, the same document with our original question set, we come to the conclusion this is a case of question paper. So when you are organizing such a huge prestigious examination for the future assistant professors, for PhD students, you have to maintain the quality. I can say this is a very nice information I am sharing with you with full pain. We are taking responsibility. We have to rectify the system. Very soon we'll come out with dates. We'll see how student will be less burdened with the examination, but quality and transparency will be there. 81 to the right. मेरा नाम समीक्षा है और हिंदी खबर न्यूज चैनल से मैं हूँ।
सर मेरा सवाल ये है कि जब पेपर लीक हुआ, क्योंकि आज अनुराग यादव ने अपना कबूलनामा दिया और पेपर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया बिहार में, और डबल इंजन सरकार है आपकी, सर कोऑर्डिनेशन में कहाँ प्रॉब्लम हुई? आप कहते हैं कि हम आश्वस्त करते हैं कि छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन विश्वसनीयता कैसे आएगी? और इस बात की अब क्या गारंटी है कि अब से पहले इस तरह की धांधली नहीं हुई है, क्योंकि इस बार सामने आ गया, अब से पहले कभी सामने नहीं आया, तो सर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अब कैसे आएगी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता हूं। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी बिहार पुलिस इस विषय में कुछ और अनुसंधान, कुछ और इंक्वायरी और कुछ स्पेसिफिक जो जा रही है, उसको पूरा हो जाने दो, पूरा स्पष्टता हो जाएगी। टू टू द राइट, आपका सवाल हो गया, दूसरों को भी चांस देते हैं। सर विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल का नाम उन्होंने लिया है कि आपकी, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? अगर है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? सर मेरा नाम पीयूष है, न्यूज इंडिया से हूँ, और सवाल मेरा यही कि बिहार को लेकर सिकंदर नाम का एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया, उसने उसको रुकवाने की व्यवस्था तेजस्वी यादव के पीए ने की। आपके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने इस बात का जिक्र किया है, तो क्या इस पूरे मामले में आप समझते हैं कि तेजस्वी यादव की भी कोई संलिप्तता थी या उसके पीए की? देखिए, मैं कुछ विषय को फिर अपील करना चाहता हूँ, खुद के ऊपर एक संयम रखते हुए। आज के दिन मेरे ओर से, मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग के दायित्व में, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है। हम एक चुनौती वाला समय में गुजर रहे हैं। मैं सभी को अपील करूंगा कि ये विषय को, मैं देश की विद्यार्थी की हित मेरे मन में सबसे प्राथमिकता है। उनकी अभिभावकों की, मैं इस बीच में कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ अभिभावकों को भी मिला, कई विद्यार्थियों की मेल मेरे को आती है, बहुत सारे लोगों की नाराजगी मेरे पास आती है। मैं उसको आज पेरेंट, आज बड़े भाई, आज अभिभावक, मेरे पास उसको स्वीकार करना, उनको संभालने की अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं उनको संभालता हूं, उनकी नाराजगी वाजिब है, ये प्रजातंत्र है, लोगों की बात हमें सुननी है, और उनके लिए जो न्यायोचित मार्ग होगा, जस्ट एंड लॉफुल होगा, उसको करना सरकार की दायित्व बनता है। मैं हमारी सरकार की तीसरी पारी में मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आश्वस्त करता हूं, आपको धीरे धीरे दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट आज हो जाएगा। कई चीज अपने आप में समय के हिसाब से स्पष्ट हो ही गया है। सरकार की मंशा बहुत ही पवित्रता के साथ मैं कहूं स्पष्ट है। भारत को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा शक्ति ही माध्यम है। उनको कोई भी प्रकार की असुविधा जाने अनजाने में हो, हम नहीं चाहेंगे। Some amount of inefficiency that has been followed by NTA and that is inefficient. Will there be some action that will be taken by a government who in the past has definitely taken some stern measures against corruption? Certainly, I assure you. 45 to the left. Hi sir, I'm Piyush from India Today. My question is regarding the NET examinations. We have seen as to how because of the paper leak, UGC-NET examinations have been cancelled. Can we see that NET examinations for 24 lakh students be redone? And the other question is about what was the need of changing the mode of conducting examination of NET from the CBT mode to pen paper mode? This question is also being asked. I think I have already answered by Ritika's question, the part one of the question. Why we have adopted a process in UGC-NET and why we have adopted a process in the NET. I think I have answered that question. Regarding why we have changed,
It's up to the examining agency because both are the well-established examination method of our country, both CPT and OMR, pen and paper. Last year only, NTA has conducted examination of different kinds. The 1 crore 30 lakh students and youth. This year, by this time, NTA has conducted examination of 80 lakh students and youth. Different states, different agencies. And in both the way, we can't say apple is good or orange is good. Both have their own way. I assure you, when we are going to form a transparent committee, we'll take their advice. How one practice will become to India, how more transparency will be there. Government is committed for that. 256 to the right. Sir, Aishwarya Paliwal, Aaj Tak in India Today. Sir, any information regarding how the paper leak in Bihar took place? Any specific information you have received? Please wait. आप थोड़ा इंतजार करिए. आज तक तो हमारे पास जानकारी है. कई विषय पब्लिक डोमेन में आप लोगों ने भी दिखाए हो. थोड़ा उसमें तथ्य और जोड़ना पड़ेगा. चाहे बिहार पुलिस अच्छे से उसको किया ही है. उसको सारे रिपोर्ट अभी सामने ले आएंगे. थोड़ा इंतजार. Sir, there must be lakhs of students watching you at this point of time. Any two things you would like to tell to the students? I will appeal to all my young friends. Government is committed for your future, for your intellectual capacity. We recognize your intellectual capacity. We will assure you, government will always adopt a transparent practice and process to protect your interests. Have faith in government, have faith in system. Nothing wrong can be tolerated by government. मैं सभी को निवेदन करना चाहूंगा, सारे विद्यार्थी मित्रों को, अब अस्वस्थ रहिए. कुछ गड़बड़ियां सरकार के सामने ध्यान में आई है, उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं. पारदर्शिता के साथ मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करना चाहूंगा, अफवाह में बच जाइए. जो सत्य है, आज के दिनों में कोई भी चीज छुप नहीं सकती है. सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की नजर में है. जो भी घटना हो रही है, देश की जनता, देश की मीडिया, देश की प्रबुद्ध वर्ग सारा चीजों में इन्वॉल्व है. घबराने का कोई कारण नहीं है. हम ये सब देश की भविष्य सुरक्षित रहे, आज के विद्यार्थी सुरक्षित रहे, उनकी मेहनत पानी में ना चला जाए, इसी दायित्व के साथ हम है. Number 11 to the left. Good evening, sir. Rishabh from Times Now. So, cancelling UGC-NET can be seen as a knee-jerk reaction. But is there a plan in place for future to ensure that these things not happen? Because in the last 1 week, we have seen at least 35 lakh students and young professionals in this country suffering. 11 lakh from the NET exam and 24 lakh from NEET papers, the controversies that are looming around it. So is there a plan already in place that the government is, while you're saying that government is committed towards the welfare of students and well-being of students, but these things, A, is a financial burden, B, is a waste of time for them as well, given that they have been preparing it for years and then on the day of paper or a day after, the exams get cancelled. I totally agree with you. I don't have any words to share, only sympathy with words. We all are concerned, and cancelling the NET UGC is not a knee-jerk reaction. We have some proof. We have to take a decision. Sometimes decisions are very painful and hard. Yesterday, our ministry, our senior colleagues took a painful decision, unfortunate decision, but we have to take. Protect the future of our professionals, those who will be assistant professors, those who will be doing PhD. There must be transparency. This question leak is a institutional failure from NTA. That's why we are assuring you there will be reform committee, action will be taken, responsibility will be fixed. 95.
बच्चों में बड़ा मुद्दा है कि जो इस बार रैंक में काफी उछाल आया है, इसको मंत्रालय किस तरीके से देख रहा है और क्या इस पर कोई इंक्वायरी है उस पर आगे? देखिए, इस बार आपको मैं दो विषय बड़े विनम्रता से कहूं कि कोविड के समय में एनसीईआरटी और सीबीएसई ने अपने सिलेबस को थोड़ा छोटा किया, कुछ अंशों को छोड़ा था। नीट की परीक्षा उस रिड्यूस सिलेबस के ऊपर हुई। दूसरा, इस बार जो विद्यार्थियों की मेहनत रही है जिस प्रकार की, क्योंकि बहुत कुछ सालों से एक प्रेशर आ रही थी कि सुसाइड वगैरह को कैसे सामना करें। हार्ड क्वेश्चन एक चैलेंज था। एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब मिलके रिकमेंड किए थे कि क्या जो बच्चे स्टेट बोर्ड के आते हैं, जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के आते हैं, जो बच्चे गरीब पृष्ठभूमि के आते हैं, उनकी बोर्ड की लेवल की क्वेश्चन होनी चाहिए। इस बार देश भर की सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए 12वीं के स्टैंडर्ड्स की क्वेश्चन आए, जिसके कारण गांव गरीब पृष्ठभूमि की, ग्रामीण पृष्ठभूमि की, छोटे शहरों की, अगर आपको एक उदाहरण दूं, नवोदय विद्यालय वाले कहीं बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए, नवोदय में पढ़ते हैं। हर एक नवोदय की 10 से 15 से 25% तक विद्यार्थी इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस होते हैं। आज बहुभाषी परीक्षा होती है, 13 भाषा में परीक्षा होती है। इस साल 655 नए सेंटर्स खुले। इस सभी के कारण इंटरव्यू